listeners, welcome back to my YouTube channel. Today we will understand the poem Essence of Life through question answers. सीज द डे माने आज एक्टिव आज जो टाइम अच्छी सेटा को भल भाव यूटिलाइज कर आज दिन को सबू एज यू कैन डू यूज इट सेटा कही. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द पोएट से अबाउट लाइफ इन द फर्स्ट स्टांजा. फर्स्ट स्टांजा रे से कौन कहती कौन लाइफ विषय रे. In the first stanza, poet says that life is not an empty dream, but it is full of hopes and adventures. A lazy person whose soul is in slumber fails to see possibilities of life. Such person considers life as an empty dream. जो पर्सन तार किसी करेनि घर भितर शई रुहे से ही जो एक्चुअल लाइफ रे कौन हुए कि लाइफ रा एडवेंचर से लाइफ रा मजा से नहीं पारे नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डज द पोएट मीन बाय लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट. अर्नेस्ट माने जानिचो सीरियस है ना. अकॉर्डिंग टू द पोएट लाइफ हैज सम वर्थ एंड नॉट एम्प्टी ड्रीम. नॉट एन एम्प्टी ड्रीम है नॉट एन एम्प्टी ड्रीम. लाइफ इज रियल एंड सीरियस है अर्नेस्ट. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज पोएट्स ऑब्जर्वेशन ऑन सोल. सोल विषय से कौन कही ना सोल गोल हूँ सोल गोल नुहे जे से श्मशान को जीव बा ग्रेव को जीव तार डेथ हुए बोली कहीं ना सोल इमोर्टल. द पोएट बिलीव्स दैट सोल इज इमोर्टल though human body is made up from dust and after death the mortal body mingles with dust but the soul remains unaffected and its goal is not grave है ना. कौन आमर mortal body जो मरणशील देह माटी रे मिसी जाए मिंगल्स मीन्स मिसी जीवा है बट आमर सोल कौन को है ना यार गोल ग्रेव नुहे कि डेथ. सोल्स गोल इज नॉट डेथ है ग्रेव कहला आम डेथ बुझा एंड इट्स रिमेन्स एटा केमती रुहे रिमेन्स माने एमती ही रही जाए अनअफेक्टेड. क्वेश्चन नंबर 5 इज कोट द लाइन व्हिच मीन्स डेथ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ. लाइफ रो गोल नुहे बोली डेथ है ना. कोना लाइन नंबर 6 ऑफ द पोएम सेज दैट डेथ इज नॉट द गोल ऑफ द लाइफ. The line is and the grave is not its goal है ना लिखा ही थिला ना ऊपर भी. क्वेश्चन नंबर 6. What attitude does the poet challenge in the first 2 stanzas? Is the attitude of the poet positive or negative? पोएट रो attitude टा नेगेटिव थिला ना पॉजिटिव थिला. ऑफ कोर्स पॉजिटिव थिला बट को एटीट्यूड को से चैलेंज करूछंती नेगेटिव एटीट्यूड को चैलेंज करिके तांकर पॉजिटिव एटीट्यूड शो करूछंती. एज द पोएट एक्सप्रेसेस पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. मेनी पीपल हैव पेसिमिस्टिक आइडिया ऑफ लाइफ. ही चैलेंजेस द negative attitude by saying that life is real and earnest. It is full of hopes and possibilities. से कहते जे लाइफ होची मीनिंगफुल आउ एटा रियल अर्नेस्ट आउ यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ है ना. क्वेश्चन नंबर 7. डस्ट द अर्थ टू द
dost thou returns this expression alludes to the Bible है ना एटा बाइबल रु आना है कही पढ़ेला बेले भी then what are the other lines in the poem that make an allusion to the Bible बाइबल रु आउ को गुडा को कोट करा है बा आना है कौन ना को लाइन टा आना है art is long and time is fleeting next line is and our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave ए लाइन टा आ गोटे आना है क्वेश्चन नंबर 8 what does the poet say about the goal of life in stanza 3 रे गोल विषय रे कौन कहिसंती लाइफ रो गोल विषय रे हला लाइफ हैज इट्स ओन गोल sorrows and happiness cannot be the all all and all of our life केवल आमर सोरो एंड हैप्पीनेस वन साइड रे हुए नहीं कि एटा ही कंप्लीट लाइफ नुहे आवर लाइफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सोरो एंड हैप्पीनेस है ना वी आर बोर्न टू एक्ट टुमारो इज फार अवे फ्रॉम टुडे सो वी मस्ट डू व्हाट वी हैव टू डू नाउ एट प्रेजेंट जोटा करबा को पड़िबो वी हैव टू डू आवर ड्यूटी क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द पोएट्स ऑब्जर्वेशन ऑन आर्ट विषय से तांकर कोन ओपिनियन देइ छंती बा से तांकर कोन केमिति ऑब्जर्व करि छंती आर्ट इज इटर्नल एंड टाइमलेस आर्ट रिमेन्स एज इट इज इन द वेव्स ऑफ टाइम इज टेम्पोररी टाइम हैज इट्स लिमिट्स एंड आर्ट इज परमानेंट से आर्ट कथा कही है ना आर्ट जमीती भी हो जमीती भी अच्छी सेमिति ही रुहे काल पर काल टाइम पर टाइम आसी जाए किंतु आर्ट सेमिति ही रुहे एज इट इज जमीती थिला सेमिति ही से कालर कराल रे सेटा लीन हो जाए नाही क्वेश्चन नंबर 10 बी ए हीरो इन द स्ट्राइप इज इट एन इंस्पायरिंग कॉल ऑफ द पोएट व्हाट अदर थिंग्स डज द पोएट अर्ज अस टू डू से आउ कौन कहती सेटा बी ए हीरो इन द स्ट्राइप सेटा स्ट्राइप मीन्स बैटलफील्ड है ना बैटलफील्ड हिला ना तो एटा इंस्पायरिंग ना नुहे यस बी ए हीरो इन द स्ट्राइप इज एन इंस्पायरिंग कॉल ऑफ द पोएट लाइफ इज ए बैटलफील्ड द पोएट इंस्पायर्स अस टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली He inspires us to be active and courageous. He says us not to be like dam-driven cattle. Question number 11. Why does the poet prefer the present to the past and future? से future आ past ठारू बेसी importance present को काहे की देई छंती because future is uncertain जते भी खुशी हेई था ना काहे की सेटा uncertain not in your hand and we have no control over the past so it is meaningless है ना but we can utilize and have control over the present amro present upre control अछि let us make the best use of present so we should use our best in at our present time okay question number 12 what do the lives of great men remind us very important question what do the lives of great men remind us कौन हमको रिमाइंड कर दिए lives of great men remind us to be sublime means noble है ना we can make our life worth or noble we can make our life noble living following the footprints of great men similarly after our departure our future generation will remember us and follow our footprints question number 13 how do the examples of great men help person in distress the person in distress means who is hopeless okay distress means hopeless a person in distress lacks faith in life तार लाइफ स्ट्रगल हारी जाए ता पाखरे आ किसी आशा न थाए विश्वास न थाए एट सच पॉइंट्स
In that situation, the footprint of great men who had achieved success struggling against odds of life will guide the person in distress towards success. The person who have lost his hope in the struggle of life, that person can get hope again by seeing or looking at the footprints of the successful person. Okay. Question number 14. How can we make our life sublime? How can we make our life sublime? By following the life struggles of kaharo na great men है ना. The poet advises that we can make our life sublime by following the lives of the great men. We can also leave our footprint. We can also leave our footprint on the sand of time. Question number 16. Poet uses some depressing words. This is words. In the poem, empty, dead, grave, what other? एगुड़ा यूज करिसेंते एंड व्हाट आर द अदर सच वर्ड्स ही यूज इन सच अदर डिप्रेसिंग वर्ड्स यूज इन द पोएम है एटा क्वेश्चन केमती भूल अच्छी ता माने हला व्हाट आर द अदर वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड इन द पोएम कोना सोरो मफल ड्रम डम ब्यूरी सिप्रेक्ट एगुड़ा कहले डिप्रेसिंग वर्ड्स हला. Question number 70. What is the tone of the poem, inspiring or depressing? कौन थिला? Of course, from the very beginning, the poet is inspiring us how to live and how to win and how to success your life, how to be a successful person in your life है ना. So it is inspiring. The tone of the poem is inspiring. The poet inspires us to make our life sublime. Make our life sublime by facing the challenges in life bravely. He inspires us to be a hero in the battle of life. Simile means figure of speech making comparison between two unlike things based on a similarity in one aspect and using कौन like एज है कही सो कौन थी ना जमती स्टिल लाइक मफल ड्रम्स एंड कौन कही आउ गोटे कौन थी ना बी नॉट लाइक है बी नॉट लाइक डम ड्रिवन केटल. लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम व्हाट फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड हेयर कौन यूज है आउ गोटे मु फिगर ऑफ स्पीच कही सिमिलर टू द सिमिली कौन थिला ना कंपैरिजन सेटा भी कंपैरिजन अछि दैट इज मेटाफोर थिला तो एटा कौन थिला ना कंपेयर्ड विथ एन एम्प्टी ड्रीम फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफोर हैला. Another example of metaphor in same stanza is for the soul is dead that slumbers. एटा गोटे मेटाफोर सेटा अलसुआ मान को पई कुहाय थिला. Okay, we will meet again in the next